Now the next topic is artificial kidney. Artificial kidney is also known as hemodialysis. Artificial kidney is a device which is used to remove nitrogenous waste products from the blood through the process of dialysis. Now, why a person needs dialysis? Because of the kidney failure. Now, what can be the reasons of kidney failure? Kidneys which are required for survival. A person may damage its kidney because of the following reasons: infection, there can be an injury, or restricted blood supply to the kidneys, or there can be accumulation of poisonous waste in the body. So in that case, artificial kidney is used to remove the nitrogenous waste from the body through dialysis. Now, what is the structure of this artificial kidney? Artificial kidney, as you can see, it consists of a number of semi-permeable tube-like structures, a number of tubes which are interconnected. These are the number of tubes you can see. These are interconnected. They are connected with each other. And the two ends of the, these tube-like structures, interconnected tubes, they are placed in a डायलाइजिंग फ्लूइड. ये देखो ट्यूब्स के बाहर ये जो ग्रीनिश सा नज़र आ रहा है, इट इज़ अ टैंक which is containing dialyzing fluid, and the fluid present in the tank, it has same osmotic pressure as that of blood, but it does not contain any waste. So what is the function or the working of this artificial kidney? The patient's blood, we can see it is taken from a artery. The patient's blood is taken, it is made to pass through these interconnected tubes. तो जब ये इसमें से पास करता है तो जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, दे आर गिवन इनटू दिस ऑस्मोटिक फ्लूइड, एंड देन दिस ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज़ कलेक्टेड इन अ बॉटल, और यहाँ से जो है फ्रेश जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है वो ऐड होता रहता है. एंड द ब्लड आफ्टर पासिंग थ्रू, सिर्फ ब्लड जो है इन ट्यूब्स में से पास होके वापस इट इज़ मेड टू पास इनटू द वेन ऑफ द पर्सन. आर्टरी से लेते हैं, डायलाइजिंग सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं इसको इन दीज ट्यूब्स, एंड देन इट इज़ मेड टू एंटर अगेन इनटू द बॉडी. तो नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट इनिशियल फिल्टर रेट बाय द किडनी इज़ अबाउट 180 लीटर्स डेली. एक दिन में 180 लीटर के करीब जो फ्लूइड है वो किडनीज फिल्टर करती है. किडनीज एक्चुअली दे आर द बिजिएस्ट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच वर्क नॉन स्टॉप right from before the birth of the person till the death of the individual.